A very warm good evening to you and all my fellow panelists. Guru Prakash, I'm sorry. Thank Slip you, of tongue. Padmaja, for, in a sense, exposing Mr. Rahul Gandhi. Thank you, Padmaja. It's really important for us to understand a couple of things. Mr. Rahul Gandhi on a foreign soil, doing this foot in mouth, this is not for the first time. And thank you that you played out his speech, the part of his speech where he says that people from the lower caste are not allowed to participate. People from the lower caste are not allowed to participate. This is what Mr. Rahul Gandhi has said. Padmaja, you and I, the whole country, we are all very well aware of the fact that it was Mr. Rahul Gandhi and his political party that opposed tooth and nail the historical elevation of a woman from the tribal community to the highest constitutional office in the country. Today, I challenge Mr. Rahul Gandhi and his henchmen of having a debate on inclusion. More than 27 OBCs. For the first time, we have people from Dalit community at the Rajya Sabha from the nominated level as well. What have you done on the contrary, sir? Our leader, Baba Sahib Ambedkar, he dies in 1956. Because of your hatred of Baba Sahib Ambedkar, more than 40 years after his death. It took you 40 years. It took us a non-Congress government at the center to give Bharat Ratna to the icon of Dalits, to the icon of this country, Baba Sahib Ambedkar. And now you are calling yourself the spokesperson for Dalits? Dalits can speak for themselves. We don't need Rahul Gandhi to speak on our behalf. Point number one. Point number two, Padmaja, we need to understand that there is a pattern to it. There is a pattern to the Congress's DNA. We still remember 1966, outside the Parliament House, sadhus were protesting against cow lynching. Madam Indira Gandhi ordered and gave an order to shoot them. We still remember 2007, Prime Minister Manmohan Singh says, only for politics of minority appeasement, कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है. Did you say? Okay. Have you said कि देश के संसाधनों पे पहला हक लोअर कास्ट का है? देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का है? हमने स्वागत किया होता. But this politics of appeasement, this politics of insult of Hindus, this politics of behalfism, that you will speak on behalf of Dalits, on behalf of tribal, this speaks of your arrogance, Padmaja. Mr. Ajay Verma, more specifically, and I find this very interesting because for the longest time, if there was somebody who opposed the anti-Brahmin, anti-Hindu politics, which was started by the originators of the DMK, which was the DK at that time, was Pandit Nehru himself. Pandit Nehru wrote a letter saying that I am much distressed by the anti-Brahmin campaign continuously carried out by E.V. Ramaswamy Naikar. I write to you, I think about this some time ago, and I was told that this matter is under consideration. I find that Naikar is going on saying the same thing again and again, calling upon people to start stabbing and killing. This was being opposed by Pandit Nehru, and now the Congress is mirroring the DMK's campaign. शैलजा, देखिए, ये अभी बैठे हुए बीजेपी के योग्य स्पोक्स पर्सन थे, मैं सुन रहा था, और देखिए ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये चीज करते हैं. बात हिंदुत्व की अगर आती है तो ये हिंदुओं के लिए जो दिखते हैं वो करते नहीं, और बात करते हैं. राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो उससे अक्षर सत्य कही है. इनको ये भी नहीं पता कि उपनिषद कितने हैं. अगर इन्हें पता हो तो बता दें, वेद में क्या है लिखा गया है. ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे. मैं बता सकता हूं आपको एडवांस कि कितने उपनिषद हैं, वेदों में क्या है और कैसे है. इस पे डिबेट खत्म हो जाएगी. नहीं, बट डिबेट ये नहीं है अब ये गूगल ढूंढेंगे और इसे मेरे पास टीवी नहीं है. डिबेट ये नहीं है. डिबेट है कि क्या कांग्रेस का स्टैंड आज वही है जो कि डीएमके का एक वक्त पे हुआ करता था, जिसको खुद कांग्रेस अपोज करती थी, व्हिच वाज अबाउट विरुलेंट हेट अगेंस्ट अ सर्टेन रिलीजन एंड कम्युनिटी. पद्मा, मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूं कि ये बात करते हैं हिंदू सनातन. सनातन का मतलब इन्हें पता है कि सनातन का मतलब शाश्वत है और जिसका आदि है ना अंत है, उसे कहीं भी जोड़ लेते हैं. अब रहा सवाल हिंदू का, 2014 में एक साहब आए थे और भारत की खोज हुई थी, तो वो राजा साहब जब आए थे तो 2014 से आज 23 आ गया. हिंदुस्तान में अगर देखिए 30 स्टेट में कोई भी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं, गृह मंत्री
हिंदू, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, 545 सांसद में 543 चुने जाते हैं, 2 नॉमिनेट होते हैं, उसमें मुश्किल से 10 मुसलमान, और राज्यसभा के 245 में से मुश्किल से 10 राज्यसभा वाले मुस्लिम्स। तो फिर इन्होंने आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करा? सर, टारगेट लेकर चलते हैं, झूठ बोलते हैं। अगेन अरे भाई, जब आप दुनिया हिंदू जहान की बात कर रहे हैं, मुद्दे की तो बात बांटने नहीं का कर काम रहे। करते हैं हिंदू आप ये। राष्ट्र कोई बनाने